saffron, white, and green, invigorating spirits fly towards zenith, colors of freedom, coalesced with each other, divine unison. Each person has his or her favorite place that holds cherished memories and secrets and a very close place in their heart. But only few places have an appeal to one and all, and one such country which is loved by all is India. There are many reasons to love a country as diverse and as big as India. Today, as we celebrate the 75th independence year, and as India slips into the 76th independence year, we shall celebrate our Indian glory, our Indian past, our freedom struggle, and all the rich things that we as Indians carry. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, grandmother of legend, and great-grandmother of its tradition. Be it the invention of the numeric system, the origin of Sanskrit, or the birthplace of medicine, Ayurveda, homeopathy, and many more, our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only. Let's come together for a special episode of Diksha's Got Talent, where we have our own Dikshites perform and celebrate the Indian independence. Hello, my name is Shashank. And I'm Sanjana. Today, as we travel through our Independence Day special episode, let's look at our nation in the modern times. India has immensely grown and is developing and is reaching global heights in many aspects. So throughout this episode, along with cultural performances, we're going to bring about different aspects of our nation. So sit back and enjoy it with us. Here's an interesting fact. The Greeks referred to the Indians as Indoi, which means the people of Indus. And in 1961, there were over 1,500 different languages in our country, and now the Constitution of India recognizes 23 languages. And this makes our subcontinent one of the most diverse countries around the world. Now, let's watch a first performance. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam Malayaj Sheetalam Sasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। उड़ा तेरी खातिर वो रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। उठो हिंद की वीर सपूतों माँ ने तुम्हें पुकारा है,
उठो हिंद के वीर सपूतों, माँ ने तुम्हें पुकारा है। खालिस्तान क्यों मांग रहे हो, सारा देश हमारा है। कश्मीर क्यों मांग रहे हो, सारा देश हमारा है। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी, लेकिन पहले पहले हम सब केवल भारतवासी। करो फैसला आज हुआ क्या, करो फैसला आज हुआ क्या। माँ का हुआ बंटवारा है, माँ का हुआ बंटवारा है। खालिस्तान क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान हमारा है। कश्मीर क्यों मांग रहे हो, सारा देश हमारा है। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। सोना चांदी जो कुछ मांगो हम देते हैं। हीरा मोती जो कुछ मांगो हम देते हैं। धन दौलत में जो कुछ मांगो हम देते हैं। तन का टुकड़ा टुकड़ा मांगो हम देते हैं। यही हमारा मूल मंत्र है। यही हमारा मूल मंत्र है, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। खालिस्तान क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान हमारा है। कश्मीर क्यों मांग रहे हो, सारा देश हमारा है। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। जय हिंद। Thank you. That was a beautiful performance. Our history is as rich and colorful as our country. And every place in India has its own past. The stories of how it came to be as it is today always enriches my curiosity and knowledge about our country. India is like a slice of heaven for photographers, from its varied lifestyles to people, food, and cultures. Indian monuments, mountains, the Himalayas, the sand dunes, and the deserts are all tourist attractions. The topography of India is so varied that you're never far away from a weekend getaway. Wow! Aren't we all so lucky to be so close to nature? Come, let's follow our next performer. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ್. ನಾನಿಂದು ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಲ್ಲ. ಇದು ಜಲಿಯಾನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನ ಮಣ್ಣು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೂಗುಗಳು, ಕನಸುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ದ್ವೇಷ, ಆಕ್ರೋಶ, ರೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಂತೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ನಾನು 3 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕಟ್ಟಾ ಸಿಂಗ್
ಅವರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತೆತ್ತರು. ಹೀಗೆ ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕ ನಿಮ್ಮಂತವರ ಕೆಳಗೆ ಶರಣಾಗುವನೇ? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನಿನಗೆ ಸಾವಿನ ಭಯವಿಲ್ಲವೇ? ಭಯ? ಹಾ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಸಾವಿನಿಂದಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆದುಕೊಂಡರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಭಯವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನಿನಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆಯೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ತಾವು ಹೆತ್ತಿದವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ. ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗೊಟ್ಟುವ ಭಯ. ಹೆತ್ತವರ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೆತ್ತರಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದರ ಮುನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವುದೇ ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಡಿಲೇರಿ ಬರಲಿ. ಆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ಕೋತಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಕಡುಗಳ್ಳರಂತೆ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಿರಿ. ಆ ದಿನ ನೋಡಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It was a wonderful performance indeed. Our country is the place of origin of Buddhism, Jainism, and also to the oldest religion known to humanity, Hinduism. We are never short of festivals and celebrations. The gathering of Kumbh Mela is so huge that in 2011, this religious gathering was visible from space through a satellite. I am Sugandhini Chekka from Diksha, Vizag. I am going to sing Nirmala Sura Ganga Jala Sangama Kshetram Rangula Hari Vinnula Vinasillina Ninayam. Nirmala Sura Ganga Jala Sangama Kshetram Rangula Hari Vinnula Vinasillina Ninayam. Bharata Desam Mana Janma Pradesam Bharata Kandam Moka Amruta Bhandam Uttarana Unnatamai Himagiri Sikaram Dakshinana Nelakonnadi Hindu Samudram Uttarana Unnatamai Himagiri Sikaram Dakshinana Nelakonnadi Hindu Samudram Toorupu disa pongi porale Ganga Sandram Toorupu disa pongi porale Ganga Sandram Paschimana Anandamai Sindhu Samudram Bharata Desam Mana Janma Pradesam Bharata Kandam Moka Amruta Bhandam ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటన్న ప్రదేశం రత్నగర్భ పేరు కన్న భారతదేశం ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటన్న ప్రదేశం రత్నగర్భ పేరు కన్న భారతదేశం వీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం వీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం సత్యధర్మ శాంతులున్న ప్రేమ కుటీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం
భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారతఖండం ఒక అమృత భాండం. థ్యాంక్ యూ. You know that the world's first organic state was from our very own nation? Yes, some of you might have guessed it right. Sikkim is the only Indian nation to have adopted 100% organic developments, and many other states are also following the same.
India has the third largest startup ecosystem in the world. The Indian startup ecosystem is home to approximately 38,815 active startups. Entrepreneurs, startups, investors, and internet penetration are the four fundamental pillars of any startup ecosystem around the world, and India is positively growing on all the four fronts. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। Indian national kabaddi team has won all the Kabaddi World Cups. Even in the ongoing Tokyo Olympics, Indian contingent have performed really well. All in all, they have won 7 medals with 4 bronze, 2 silver and 1 gold. Neeraj Chopra has bagged the gold. PV Sindhu and Mirabai Chanu have bagged the silver. And we also have the Indian men's hockey team that has won the bronze. There are other athletes also who have performed extremely well and have shown great grit and determination and have etched their names in Indian Book of History records in the Olympics. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। With the launch of the Make in India initiative, the country has been a spur in infrastructure development. Key sectors that are driving the growth of the Indian economy are construction, automotive, technology, financial services and healthcare. Famous brands such as Lakme, Royal Enfield, Jaguar, Infosys and many more have outshined globally. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्, सस्य श्यामलाम्
India has a mysterious anti-gravity hill called as the Magnetic Hill in Ladakh. This hill is very unique because the objects and the cars which are actually moving downwards appears to be moving upwards in defiance of gravity, and this phenomenon attracts many tourists from many parts of the world who come and see this hill and are more often than not in awe and curiosity as to how this can happen. Isn't it wonderful? Our Indian cuisines are not behind in popularity too. Now, individuals all over the world are adopting a vegan diet and opting for a healthy lifestyle. Not only this, many famous food joints such as Domino's, Pizza Hut, and KFC have all produced Indian versions of dishes. Now, having a paneer tikka pizza and a vegetarian burger has become a favorite.
it is an economic powerhouse because 85% of the people there in Dharavi are employed and few of them have also ended up becoming millionaires. It is a city within a city. It contributes a lot towards the growth of our nation. Even during the COVID-19 pandemic, the module of the Dharavi helped in actually curbing the spread of COVID-19. वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरम् भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। विनरा विनरा देशं मनदेरा, अनरा अनरा रेपिक मनदेरा। विनरा विनरा देशं मनदेरा, अनरा अनरा रेपिक मनदेरा। నీ ఇల్లు ఆంధ్రదేశమని నీవే తెలిపిన, నీ నామం ఇండియన్ అంటూ నిత్యం చాటరా। వినరా వినరా దేశం మనదేరా, అనరా అనరా రేపిక మనదేరా। ಭಾರತ ದೇಶವು ನಮ್ಮಿ ತಾಯ್ನಾಡು, ನಮ್ಮಿ ನೆಲವು ನಮ್ಮಯ ಸಿರಿನಾಡು। ಭಾರತ ದೇಶವು ನಮ್ಮಿ ತಾಯ್ನಾಡು, ನಮ್ಮಿ ನೆಲವು ನಮ್ಮಯ ಸಿರಿನಾಡು। ಈ ದೇಶದ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಮರೆಯದಿರಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಂದು ಅಳಿಸದಿರಿ। ಭಾರತ ದೇಶವು ನಮ್ಮಿ ತಾಯ್ನಾಡು, ನಮ್ಮಿ ನೆಲವು ನಮ್ಮಯ ಸಿರಿನಾಡು। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन। गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ, मिलके रहे हम प्यार से जाओ। तमिला तमिला कन्नड़ कलगादे, मिनियम मिनियम मुल्लम मयगादे। तमिला तमिला कन्नड़ कलगादे, मिनियम मिनियम मुल्लम मयगादे। എൻസിരകൾ പാടുകയല്ലോ വന്ദേ മാതരം, എൻ മൗനം നേരുകയല്ലോ അമ്മേ മംഗളം। എൻസിരകൾ പാടുകയല്ലോ വന്ദേ മാതരം, എൻ മൗനം നേരുകയല്ലോ അമ്മേ മംഗളം। ഭാരതമെൻ്റെ ജീവസ്പന്ദമേ, ഭാരതമെൻ്റെ പ്രാണ
പ്രാരതമെൻ്റെ ജീവസ്പന്ദമേ, പ്രാരതമെൻ്റെ പ്രാണമന്ത്രമേ. വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ വന്ദേ मातरम. पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का. वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा. गोदी में खेलते हैं इसकी हजारों नदियाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा. The pandemic has opened our eyes to observe everything that happens around us in the world. Though in India we find loss of lives due to poverty, diseases and discrimination, we also see Indians being patriotic, optimistic and philanthropic. Oh dear soldiers, oh defenders of borders, we pray for you brave men, may the Lord bless you all. ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो. मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा. इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी फसलों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा. इतनी सी है दिल की आरज़ू. Last but never the least, India has been a force to reckon in terms of the support extended towards the United Nations peacekeeping missions. Indian hospitality and culture is known to all. We as Indians welcome all our visitors, neighbors, foreigners into our country with open arms and treat them with love, respect and with also loads of appreciation and acceptance. Our tolerance and compassion towards everyone holds good to our old saying which says Aditi Devo Bhava and Vasudhaiva Kutumbakam. एक तेरा नाम है साचा, हो एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो. एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ हो. तुझ पे वार ना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ. वंदे मातरम, वंदे मातरम. Keep,
गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी है। मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रेबल और बेस का। नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। हो रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माई तेरी चुनरिया लहराए। एक तेरा नाम है साचा, हो वंदे मातरम, वंदे। छुप ज्योत्सना पुलकितयामिनी, फूल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी। As we continue to pay tribute and gloriously celebrate our Independence Day, we as responsible younger generations have to come forward and step in, take responsibilities, and should spread the values of India to all the other parts of the world, and should prove to be responsible citizens and contribute towards the welfare and good of our country as a whole. With this, we come to the end of our Diksha's Got Talent special episode. Each performance was enthralling, and I'm sure we all enjoyed it and are eager to witness other episodes too. We would like to end this episode with a small poem. Our land is of sages, known for bravery for ages. None can with it compete, its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers and sweet fountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and are a source of prosperity. For it, let's work hard. For its safety, be on guard. Stay tuned for the upcoming episodes next week, same time, same place. Thank you.